अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू बायोलॉजी बाय और अब इस वीडियो में हम लोगों ने इस स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। पहले पिछले वीक के सारे जो लेक्चर है वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर इस वीक करेंगे, ठीक है। देख लो कि इस फर्स्ट BIF101 के लेक्चर कितने हैं जो करने हैं, तो देख सकते हैं। रोटी कैसे खाई है आपने? जब तक हम लोगों ने इसका ये वाला जितना मेरे ध्यान में है, पिछले वीक के इसके 50 लेक्चर्स हैं, तो या फिर 34 ही हैं। अब देखते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। पहले हम इसका लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए BIF101 पर और इसका हम लेक्चर देख लेते हैं। आप लोगों को पता भी चल जाएगा कहाँ से देखना है लेक्चर इस वीक के कैलेंडर से, ठीक है। तो यहाँ पर है वीक 1, वीक 2, वीक 3, करंट वीक है, वीक 4 चल रहा है। पिछला वीक था वीक 3 था। इसके हम नॉर्मल सारे करने देखा। तो वीक 4 के देख लेते हैं। वीक 4 का 44 तक है, तो 44 तक हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा क्विज नंबर 1 ओपन होगा। तो ये देखें, ये सारे के सारे हम कोशिश करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 34 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है ये। 5 करके कर लेते कंप्लीट, ठीक है। तो 34 लेक्चर पर चले जाते हैं इसके, सही है। सो ये आ गया हमारे पास में, तो हम लोग इसका क्विज ले लेते हैं, प्री असेसमेंट, सही है। सो DNA replication is a step in central dogma। तो ये आई गेस ट्रू है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यस दिस इज करेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे और ये वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। एक सेकेंड बस मैं इसको बड़ा करके, तो इसकी आवाज़ खोल के स्टार्ट से। Dear students, this is the first chapter in our course and it will be about the sequence analysis. Before we delve into this topic in detail, we need to understand the different types of sequences that are output from biological experiments. These include the DNA sequences, the RNA sequences, the protein sequences, and so on. So let's take a look at how this information is organized and the sequences are obtained. You know that
all living things are composed of cells, and at the heart of each cell lies its DNA. The DNA is responsible for the creation of a cell and its lifespan as well. The maintenance of these cells during their lifespan are also totally dependent upon the DNA sequence inside the nucleus in case of eukaryotes. Next, this blueprint that is provided by the DNA, it gets transformed into RNAs and proteins. This constitutes the central dogma in biology. The transformation of the DNA is firstly into an RNA sequence. This is followed by the conversion of the RNA sequence into a protein. And the proteins in turn, they form the various organelles within the cell as well as its membrane. Let's take a look at how this information is transferred. As you can see here, the DNA, it is encoding for an RNA, and the RNA is encoding for the proteins. The proteins, they form the cell, the membrane of the cell, the organelles within each cell, and the other signaling molecules between the cells. This is termed as the central dogma, and the flow of information between the DNA to RNA to proteins is defined as the central dogma. If you look at the DNA, then two things are obvious. The first thing is its double helical structure, that is, one strand of nucleotides are running in parallel to a second strand. Secondly, these two strands are held together by different base pairs as indicated by the colored lines. If you look at it closely, then this resembles a phosphate and a sugar, a phosphate and a sugar, a phosphate and a sugar lined upon each other on each strand in the anti-parallel direction. And the nucleotides T, A, C, T are coupled with Y, G, T, and A. Once these nucleotides they come together, they hold the two strands in a helical conformation, and you end up with the helical DNA. Next, the information from DNA encodes for an RNA. The RNA molecules are single-stranded, as shown here, and the nucleotides are unpaired, as you can see in the figure in front of you. So once you want to transform the DNA into an RNA, you have to open this DNA sequence into two strands, and the complementary strand is copied. Another difference is that in the DNA you have thymine as indicated by T, while in the RNA you have uracil as indicated by U here.
Important to note that C is complementary to G while A is complementary to U. So this is how the DNA is transformed into the RNA. And next, the RNA encodes for some amino acids, for 20 amino acids, which come together in the form of this chain, and after a process called folding, the proteins take their 3D shape. We will look at it in detail in later modules as well. And the proteins in the end, they constitute the cell and the various organelles within the cells as shown here. So in conclusion, DNA codes for an RNA and the RNA encodes for a protein, while the protein goes and constitutes the various organelles and membranes of the cells. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब हमें चलना है अपनी रीडिंग की तरफ। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताना कि नहीं आ रही या कम आ रही है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। वी नो दैट all living things are composed of cells. Here a question arises on how these cells came into being. For composition of cell, DNA has blueprints for building cells along with information of cells protein, carbohydrate and vitamins production. ठीक है, and transfer of this information from DNA to these molecules is termed as central dogma, which is DNA to RNA, RNA to proteins, proteins to the cell. Okay. So DNA is a hereditary material present in all organisms, all living organisms. It passes from the one generation to the other via cell division. All cells have DNA. In eukaryotic cells, DNA represents in nucleus, whereas in prokaryotic cells, DNA present in spreader form in cytoplasm. ठीक है, due to DNA nucleus is known as the brain of cell. DNA molecule is a duplex helix structure, contains base pairs composed of nucleotides, and these nucleotides are composed of sugar phosphate group and are bind with each other with hydrogen bonds. ठीक है, अब PPTs को भी करेंगे डाउनलोड। इसका रिमेनिंग भी पढ़ लेते हैं। Mechanism: DNA sends information to cell via mRNA, and that sequence the amino acid according to coded information, and protein structure is formed, and that protein forms a cell. सही हो गया। Conclusion: according to the central dogma, DNA code information from RNA, and RNA makes the protein, and that protein along with some biomolecules make cells and its systems. सही हो गया। चलते हैं अपने PPTs की तरफ। ऑफ कोर्स हमारा बोनस पॉइंट है PPTs। आ गए हम अपने PPTs की तरफ। ये ओपन हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। सही है। चल लेते हैं आगे। यहाँ पर जो PPTs है वो तकरीबन भी ओपन हो गई हैं, हो चुकी है ओपन। तो इसको पढ़ लेते हैं PPTs को। जीन, mRNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है। इंट्रोडक्शन: ऑल लिविंग थिंग्स आर composed of cells. How are cells made? DNA provides a blueprint for building cells. It dictates the production of cells, proteins, carbohydrates and vitamins. सही। Transformation of information in DNA into these molecules is termed as the central dogma. Central dogma है DNA से RNA में जाती है, RNA से प्रोटीन में जाती है।
प्रोटीन्स आर देन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग सेल्स, ठीक है। ये देखें वही बात है, डीएनए से आरएनए में आरएनए प्रोटीन और प्रोटीन से क्या बन गए सेल्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का। इसके बाद में ये प्रोटीन सेल का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर प्रोटीन डीएनए कोड्स फॉर एन आरएनए, आरएनए इन टर्न हेल्प्स प्रोड्यूस protein along with some other molecules forms to the cells including their organelles and membrane. So फ्रेंड्स, ये तो बहुत ईजी सी बातें थी, तो मुझे तो अच्छा समझ आ गया, होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। चलते हैं हम आगे। हमारी पोस्ट असेसमेंट है, इसको ले लेते हैं पोस्ट असेसमेंट को। Which association between complementary bases would require the most energy to break, has the highest bond dissociation energy? हाँ, I think तो कोऑर्डिनेटर देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल्स, प्रोटीन टू डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू प्रोटीन टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। हाँ, दिस इज ट्रू एंड बोथ है करेक्ट। सो थैंक्स लॉर्ड, कर लेते हैं इसको क्रॉस। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है 35। क्या है टॉपिक का नाम? न्यूक्लियोटाइड्स। बल्कि इस वीडियो में इसी सिर्फ 34 वाला टॉपिक एक ही रखते हैं, सही है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे टॉपिक अगली वीडियो से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।